Hey you guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing good and being safe and wearing your masks. So this video is the most asked video of my journey actually. This video is all about blogging and how I started my journey into that and how I grow my page and what tips and tricks I have for you guys and everything I have put up in this notes, and I am gonna share my journey with you guys. Before getting into this video, I really want to share some things. This whole video, whatever you're gonna see, whatever you're gonna hear, is just suggestions and sharing my journey. I am just here to tell you how some tips and tricks and how I grew my Instagram profile and how some things are working for me. I do not guarantee or I do not advise to do the same, because everybody's social media platforms are different, everybody's content is different, and engagement rate and everything is different. So I really wanted to you guys to just take some notes down from this video and try it for yourself. So please try to understand that this is a video me sharing my journey. I hope this video helps you in any ways if you're planning to start your blogging career or to grow your social media profile. All right, so everything started in 2016. I was just a normal girl. I still am, but I always wanted to do something extraordinary in life. I wanted to explore my own self, and I really wanted to know myself better, my potential, everything about me I wanted to explore. And I was always enthusiastic when it came to fashion and beauty, but there's still a tomboy in me. I used to be a tomboy as a teenager. I was not that girly, but that is something which I still do have it in me. I wanted to keep it alive because obviously that's me, that's what makes me me. Also, I have written not some, but everything in my notes, and I have prepared this notes. I am that person who prepares notes and plan up everything in written and then go on with the execution. So there are a lot of points that I wanted you guys to know. First would be, please only jump into this career of blogging if you are actually serious about it. And very serious. Just like people take their 9 to 5 job serious, that's what I am talking about. You have to be very, very enthusiastic. You have to love what you do when it comes to social media and creating content and everything, because you just cannot just do it for the sake of gaining numbers, just for money or whatever. Money is one of the priorities, but it shouldn't be the only priority. And also the number of followers, likes, views and everything. You want to be famous, you want to be popular and everything. No, I don't think that should be something on your mind in the beginning of the blogging career, because I don't think so that is going to help you in any way. मैं ट्राई करूँगी हिंदी में बात करने की, बट प्लीज़ बेयर विथ मी. यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो शायद हिंदी भी नहीं समझते हैं, सो आई विल ट्राई टू स्पीक इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ. सो या, बेयर विथ मी. Every journey is difficult and different in its own ways. I'm just gonna share what I know and what works for me, and every detail, what gadgets I started with and what not, what I have invested in and everything. DMs, people asking me कि हमको इतने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, हमको ये करना है, तो क्या हमें प्रोफेशनल कैमरा की ज़रूरत है, क्या हमें रिंग लाइट लेने का ज़रूरत है, या हमको लाइक महंगी चीज़ें खरीदना ज़रूरत है. नो डूड, I begun and I am still working with my phone. मैं अपने फ़ोन में सारे वीडियोस, सारे पिक्चर्स, एडिटिंग, वीडियो, पिक्चर्स, जो भी है सब कुछ मेरे फ़ोन में होता है. एंड आई हैव इन्वेस्टेड इन अ ट्राईपॉड वर्थ 1700 रुपीज़ अभी थोड़े दिन पहले. अब तक मैं जुगाड़ से काम चलाती थी. आई डिडंट हैव एनी गैजेट्स. अभी भी मेरे पास कोई प्रोफेशनल या महंगे गैजेट्स नहीं है. मैंने
किसी भी चीज़ में अब तक इन्वेस्ट नहीं किया है. आई डोंट इवन हैव अ रिंग लाइट. राइट नाउ आई एम यूजिंग sunlight. Well, there's no sun right now, but I have good lighting in my room, so I am practicing with that, and I think it helps very fine. आप मेरा कंटेंट जाके देख सकते हो इंस्टाग्राम पे. So you will find my pictures, videos, everything has been edited by myself. I edit my own videos, I edit my own pictures on my phone. I click them, my videos, सब कुछ मैं मेरे फ़ोन पे करती हूँ. अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि इन ब्लॉगर्स के पास इतना कुछ होता है, that's why they make good content and everything, don't know. ये बहुत गलत बात है. सारे लोग प्रिविलेज्ड नहीं होते हैं. मैं प्रिविलेज्ड हूँ, बट आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं अपनी चीज़ें खुद बाय करूँ. मैं अपने घर से पैसे लेना काफ़ी टाइम से बंद कर दिया है. मैं खुद आई अर्न माई सेल्फ एंड आई एडजस्ट अकॉर्डिंगली. मैं आई वोंट से कि आई एम लाइक यू नो अर्निंग द लाइक बेस्ट अमाउंट when it comes to blogging and stuff, because it takes time, you know, to earn from this platform and everything. सारी चीज़ों में you know वक्त लगता है. So please have some patience when it comes to growing your profile. आप just रातों रात पॉपुलर या रातों रात फॉलोअर्स एंड एवरीथिंग बढ़ नहीं जाने वाले हैं. और सो सबसे पहला पार्ट होगा बी योर सेल्फ. पहले तो just don't try to be somebody else. If you are going to my profile and watching things what I do and you're just trying to copy the same thing, it's not gonna help you. Someday people are gonna understand that she's just, you know, faking it. She is just trying to become somebody else. You are somebody else. अगर आपको इंग्लिश में बात करना नहीं आता है तो please, that's not something that should stop you from doing what you want to do. So आप हिंदी में बात करो, आपकी लैंग्वेज में बात करो, because there are so many people जो you know आपसे रिलेट करेंगे आपके प्रोफाइल पे आके. If you be yourself, then people are gonna, you know, follow you for who you really are, not for somebody else you're trying to become. So this is the very very important point. First point is be yourself. अपना content बनाओ खुद का. You know, get inspired. There is a thin line between getting inspired and copying. So please, I really want you guys to understand this very thoroughly. Second point would be quality over quantity. This is something I swear by. Quality is something that I make sure my content has it, no matter what. मैं DSLR पे पिक्चर्स नहीं क्लिक करती हूँ, मैं मेरे फ़ोन से सब करती हूँ, बट आई हैव अ क्वालिटी इन माई कॉन्टेंट. So post mindfully, you know, sensible content. Do not just post what others are posting. Do not go with the trend and everything. Be yourself and post वो कीजिए जो हर चीज़ आपके हर पोस्ट में there should be a you know, आपका एक सिग्नेचर होना चाहिए खुद का. I don't know if this is making sense to you, but post sensibly, you know, post mindfully. कुछ भी post करना, I don't think so it's helping or whatever. पहले तो आप अपना genre choose कीजिए blogging में कि आपको fashion में जाना है, आपको food blogging में जाना है, आपको lifestyle में जाना है, traveling में जाना है, आपको कौन से genre में जाना है. Please choose that first. And you cannot do everything at once first of all. So एक genre को पहले पकड़िए. I am into fashion and beauty and now I am into self portraits. So पहले मैंने fashion and beauty से चालू किया. I started shooting. मैंने pictures click करना शुरू किया. I started styling myself. मेरी styling, I won't give myself 100, but I am an, you know, like 70-80, because still I am improvising when it comes to styling and everything, even into makeup. So पहले you just start knowing कि आप किस चीज़ में बेहतर हो सकते हो, किस चीज़ में आप बेहतर हो. That is fashion, beauty, traveling, food. What do you want to do? So do that first. Choose करो. I'm so sorry. I just want you guys to know everything. That's why I'm becoming this thing, and this is like one of my first videos and all. And in the beginning of blogging, I used to focus on numbers a lot. That is one of the mistakes I did. I think followers, views and everything, likes, I understand totally that it is so tough to not focus on likes,
followers and numbers and views and सब कुछ. I know it is very tough to not focus on it, but please, try to focus on creating content. Just आँख बंद करके अपना काम करो. एक दिन it will all make sense, it will be fine, it will be worth it. क्योंकि आप numbers देख के content create करोगे तो I don't think so it's gonna help you. Another point is be presentable and relatable. Be presentable and be relatable. आप जो कुछ भी post कर रहे हो make sure कि वो relatable है. It shouldn't be something that आपके ऑडियंस को देखना ही नहीं है. मेक श्योर आपको पता है आपकी ऑडियंस को क्या देखना है. बिकॉज वेन यू आर पुटिंग योर सेल्फ आउट देयर इन सोशल मीडिया, यू आर रिप्रेजेंटिंग वेर यू आर कमिंग फ्रॉम, यू आर रिप्रेजेंटिंग योर रूट्स. आप कहाँ से आ रहे हो, आप कैसे हो, क्या है. दीज डिटेल्स आर समथिंग दैट actually will help you in the longer run on this blogging journey. So please note this down if you are noting anything down. Read blogs on Instagram, कैसे काम करता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कैसे काम करते हैं. सारे algorithms and everything अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए अलग होते हैं. So try to read blogs. I still remember last year I was working in some startup. I used to read दिन के 10 blogs on social media because I am a social media strategist. So I made sure that I read blogs, updates on social media, कैसे क्या चल रहा है, new feature आया है, new app आया है, क्या है. So keep yourself updated when it comes to algorithms because algorithms on social media can be very tricky. So I really want you guys to know this and start reading. So don't overdo anything would be my next point, which is another important point. कुछ भी चीज़ आप लाइफ में है या सोशल मीडिया पे है, डोंट ओवरडू एनीथिंग. मेक श्योर दैट आप कुछ भी पोस्ट कर रहे हो तो वो उसमें हैशटैग्स बहुत ज़्यादा होंगे. बहुत ज़्यादा हैशटैग यूज़ करने से आपको अच्छा ये मिलेगा. आई डोंट थिंक सो दैट इज़ समथिंग दैट हेल्प्स मी. सो फिर दिन में 10 पोस्ट करने से ये होगा, दिन में 20 पोस्ट. नो, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. रीड ब्लॉग्स. बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन है वेब पे जो आपको हेल्प आउट करेंगे. एंड आई विल लिंक इट डाउन सम ऑफ द ब्लॉग्स जो मैं रीड करती हूँ साइमल्टेनियसली, जो मुझे हेल्प करते हैं ग्रो करने के लिए एंड टू know the updates on social media. The most important point of this blogging thing is do not, I repeat, do not buy fake followers or fake likes or fake views, bots or whatever fake. Do not buy fake followers on social media ever. There are so many profiles that, and they're gonna email you, they're gonna message you, कि आप इतने रुपए में आपको इतने लाइक्स देंगे. नो, स्टार्टिंग में आपको एक पोस्ट पे वो 1000 लाइक लाके दे देंगे, बट इन द लॉन्ग रन आगे जाके आपकी प्रोफाइल हेल्थ पर बहुत असर पड़ता है. बिकॉज आई नो इट. आई हैव नेवर बॉट फेक फॉलोअर्स in my life and I thank God for that कि मेरे में इतनी अकल है कि I read all the blogs and everything, so I know how awful it is for your social media platforms to buy fake followers and everything. So please do not buy any fake followers. Avoid them. Instantly block those pages. If you're getting DMs or emails, just block them. Next point is consistency, which is very tough. I know, in anything. Actually, consistency is something maintaining, Be constant in creating content. I know you take a break. बहुत अगर कुछ हो रहा है लाइफ में या whatever, take a break. But just don't leave the thing. If you're leaving the thing, तो छोड़ ही दो फिर. Do not even start. Because if you're not passionate about something, just don't do it for the sake of other reasons. I don't think so that is worth it. Life's too short to do shit that's not worth it. So be consistent. Content create कर रहे हो. मैं कैसे करती हूँ? I plan up my weekly things कि मुझे ये हफ्ते में क्या क्या content create करना है. मेरे ideas की पूरी अलग notes होती है
जहाँ पे मैं सेल्फ पोर्ट्रेट का सेक्शन अलग है, फैशन का सेक्शन अलग है, इंस्टाग्राम फीड का सेक्शन अलग है, ब्यूटी का सेक्शन अलग है। मैं वहाँ पे आई मेक श्योर दैट आई राइट इट डाउन माई आइडियाज़। मुझे अगर कोई आइडिया आया, मैं बाहर हूँ या कहीं भी हूँ, मैं अपने फ़ोन में टाइप इट डाउन करके घर पे आके आई राइट इट डाउन कि IGTV के लिए ये कंटेंट बनाना है, सेल्फ पोर्ट्रेट के लिए ये आइडिया आया है तो ये करते हैं, ये करेंगे, वो करेंगे एंड एवरीथिंग। सो आई राइट इट डाउन, देन आई डिसाइड कि मुझे वीकली, ये हफ्ते में I choose according to my audience. I ask my audience, always remember to know what your audience want. Always remember that. You should know your audience better than anybody. Always remember this. उनको क्या देखना है वो बहुत मैटर करता है. They are here for a reason. They look up to you. They get inspired. तो फिर आपको you have to make sure that you post the content जो आपको भी पसंद है और जो उनको भी पसंद है. So आई राइट इट डाउन एवरीथिंग एंड आई वीकली मैं प्लान अप करती हूँ कि इस हफ्ते में मुझे क्या क्या कंटेंट क्रिएट करना है और किस दिन क्या रहेगा. प्रायोरिटाइज करती हूँ, पहले ये रहेगा, दूसरा ये रहेगा, तीसरा ये रहेगा, चौथा ये रहेगा, पांचवा ये रहेगा. सो आप उस हिसाब से यू कैन स्टार्ट डूइंग इट. प्लानिंग इज एवरीथिंग. प्लान अप करे बगैर आप करोगे तो आप बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे. Don't stop posting, just because you're not getting response from like public or Instagram or whatever, and I don't believe in that all. मेरा एक समय था जहाँ पे I used to get only 200 likes or 100 likes or whatever. I still remember that and I was so down कि मैं इतना कर रही हूँ तो भी क्यों नहीं हो रहा है. But I never stopped. बीच में because of my business Kuchor by Druvika, and then I started a job in a startup and everything. So I stopped blogging and everything, but now I am back at it and I always wanted to do this. Wow, like whenever I ये मुझे अभी भी याद है, this was one of my mottos कि मेरे पास अगर एक अच्छी I have couple of good people on my profile or on my audience, तो फिर surely I'm gonna make a video जहाँ पे मैं मेरा जर्नी शेयर कर रही हूँ, मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ, so that you guys can know क्या चल रहा है and everything, कैसे सोशल मीडिया पे आप ग्रो कर सकते हो and everything. So now I'm gonna jump into the questions that you guys asked me and I get a lot of DMs. क्या है, कैसा है. I'm gonna answer all the questions जहाँ से आपको सब कुछ समझ आ जाएगा. अगर मैं कुछ skip भी कर रही हूँ तो you can ask me in my comments. Alright, so first question is, what should be the budget to start vlogging, like to collect the thing which we need for shoot? First of all, according to your genre जो आप decide कर रहे हो कि आपको इस चीज़ में जाना है, so according to that make a plan कि first तो R&D कीजिए, research and development. First देखिए लोग क्या कर रहे हैं उनकी फील्ड में. Go to their profiles and observe good things. They are grasp good things, note down good things. कि वो लोग फैशन में है तो वो फैशन वीडियोस बना रहे हैं, वो फैशन से रिलेटेड न्यू स्टाइलिंग वीडियो बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, आप वो शुरू करो. Give it your touch. Don't copy their style. And if you are copying their style, then everything, they give credits. Right, inspired by or saw this on, ऐसा कुछ करो. Because that's how blogging is gonna grow. Giving credits to other creators, it's not gonna make you small or belittle you. So yes. So आपके पास कोई बजट नहीं होना चाहिए. Just have a good phone. उसका कैमरा अच्छा होना चाहिए. And you should have a good backdrop जहाँ पे ये मैंने खुद क्रिएट किया. It's not that great, but वो किया है. थोड़े आप क्यूट से तैयार हो जाओ and I think you're good to go for vlogging. I am entering vlogging right now, so I don't know उनका vlogging एरिया में कैसे होता है, but I do know vlogging. So I think just begun. That is how you will evolve. How can I just start vlogging? I'm not confident about it. मैं भी confident नहीं थी, अभी भी कभी कभी मैं नहीं होती हूँ. But I think कुछ चीज़ें personal battles होती है. You have to fight with yourself. You have to push yourself harder. That no, go out of your comfort zone. ऐसा हो तो रोज़ कैमरा के सामने speak some things. Try to practice things. बोलना चालू करो. आप इंग्लिश अगर आपका वीक है तो आप इंग्लिश में बात करना शुरू करो. ब्लॉग्स पढ़ो, नॉवेल्स पढ़ो.
start reading. So that's how it works. I am posting regularly and working hard on my content both on YouTube and Instagram, but my profile is, पहली तो बात, it's just something you have to be very patient, have to be a patient person when it comes to growing your Instagram profile or social media profile, क्योंकि it's very tricky out there. आप कुछ कंटेंट के साथ शायद गलत कर रहे हो, जो लोगों को देखना है वो पोस्ट नहीं कर रहे हो. ट्राई टू स्टैंड आउट, डोंट पोस्ट मोनोटोनस कंटेंट. लोगों को कुछ अलग देखना है. जो रोज़ देखते हैं वो देखते ही है, पर वो कुछ अलग देखेंगे तो वो लोग टिकेंगे, वो वहाँ रहेंगे. सो मेरा हर कंटेंट मैं वैसा ही पोस्ट करती हूँ जो अलग होता है, जो शायद मैंने कहीं नहीं देखा है. सो आई पोस्ट दैट ऑल. So the family supported you when you started this, and how you gained confidence? Wow, such a cute question. My family is something I think उनको पहले पता ही नहीं था मैं ये क्यों कर रही हूँ और ये ब्लॉगिंग होता क्या है, क्योंकि मुझे ही नहीं पता था. आई डिडंट नो व्हाट इज ब्लॉगिंग एंड व्हाई एम आई डूइंग दिस, बट आई न्यू दैट दिस इज समथिंग आई कैन बी good at, great at actually. So I just started doing that. I explained to my mother some things कि ऐसा होता है, there is nothing wrong I'm doing and everything. My father was like, okay, what are you doing? It's something you're wasting your time or what? You're doing this, photo padaave છે, શું કરે છે, photo પડાઈને શું કરીશ તું, આમ તેમ. So they were like, I'm doing modeling. So I was like, I was tired explaining them, but I was like, okay, fine, let them think that. But today, you won't believe, they understand me. They actually support, and they are like, they understand me like just fine. So I whenever I fall down, I feel very low about, and still there are so many days that I do, but I always make sure that I get up back again. I don't give up on the thing that I'm doing right now. So that's the secret. What are the important mistakes to avoid, and how we attract people into our content? Stand out. Do what others are not doing, but have your own touch in whatever you do. If you're creating a lipstick tutorial, then you should have your own touch, you should have your own signature. Just think out of the box. Stand out. If somebody's clicking pictures with the sky, you click with the sky, but it should be different in your own way. Something very different that will just make their worthwhile. So that's how it works with me. And mistakes, I would say that लोग सोचते हैं कि ब्रांड्स हमको अप्रोच करते हैं एंड एवरीथिंग. दे डू. देयर आर लॉट ऑफ ब्रांड्स दैट अप्रोच मी एंड एवरीथिंग, बट आई ऑल्सो अप्रोच देम. हम छोटे नहीं हो जाने वाले. हम लोग अगर सामने से जॉब इंटरव्यू के लिए तुम लोग सामने से ही जाते हो, ठीक है, जॉब इंटरव्यू देते हो ना, ब्रांड आपको बोलती है आप सच हो गए हो, ऐसा नहीं होता है. दे टॉक टू यू, दे कनेक्ट विथ यू, then they see if you are working fine with them or not. So that's that's the same thing, same process works here online. So I always make sure that I pitch brands. In like today also I pitch brands. आज की तारीख में I pitch brands सामने से for collaborations. Why not? It's good for my portfolio as well. So yes, I've worked with so many good brands. Mama Earth. I've worked with Mom's Co. I've worked with Bioderma. I still do. I've worked with a lot of brands. So you should never stop pitching brands. With more people from my Instagram, and how can I get collaborations? Again, that is the same thing. Try to pitch brands. तुम्हारी प्रोफाइल है, 2000 फॉलोअर्स है, 3000 है, 500 है, 100 है, 1000 है. Just first grow your audience. तुम कौन से जॉनरा में जा रहे हो, लिस्ट डाउन, लोग क्या कर रहे हैं. आप भी खुद करना शुरू करो कंटेंट. उन पिच ब्रांड्स सामने से. डोंट हैमर देम, वरना आप उनकी ब्लैकलिस्ट में आ जाओगे. दे विल नॉट कोलैबोरेट विथ यू एट एनी कॉस्ट इफ यू हैमर देम. जस्ट लीव अ स्वीट मेल, या तो DM मैसेज देम कि आई एम दिस ब्लॉगर, आई एम दिस इन दिस, ये लिंक्स है, मैंने अभी ये किया है, वो किया है. जस्ट डू दैट वंस. So that's how you get collaborations. And use good hashtags. कुछ भी एवे hashtag use मत करो. Hashtags are something that is one of the important things in social media. Use relatable and sensible hashtags. I want to quit my 9 to 5
and start my own thing. Girl, this is a huge deal. Wow, I am proud of you for even thinking this. First of all, I am so proud of you, whoever you are. But बहुत ध्यान से सोचना इसको, बहुत ही ज़्यादा टाइम लेके सोचना, देन क्विट योर जॉब. दिस थिंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज जॉब में क्या है, यू अर्न 10,000 5,000 जितने भी आप कमा रहे हो वो आने वाले हैं इस डेट पे. इस जॉब में ऐसा नहीं होता है. देर आर गोइंग टू बी डेज वेन यू आर नॉट गोना गेट पेड. सो मेक श्योर यू डू दैट. ऑल द बेस्ट. एंड टिप्स बहुत सारी है, पूरा वीडियो ये देखो आप, बहुत टिप्स है. सच में ये बहुत इंफॉर्मेटिव. आई विश ऐसा कोई वीडियो मैंने देखा होता 2016 में. वी हैव टू बी अ पार्ट ऑफ एनी एजेंसी टू हैव कोलैब्स. Not necessarily. There are people who are part of agencies and everything, but I am not. I just fill their forms. They provide me. मेरे charges क्या है, मेरा email address क्या है, मेरा नाम, address and everything. If I'm open to barter collaboration, yeah, or I'm open to you know, paid collaborations and everything, my media kit and everything. So I fill all the forms they provide me, and then they approach me अगर कोई भी collaboration possibility होती है तो. So that's how I get collaborations. So you can also try to get some if you have good pretty audience जहाँ पे आप बाटर कोलैबोरेशंस भी कर सकते हो. सामने वो आपको प्रोडक्ट देंगे और आप वो प्रोडक्ट को आपके प्रोफाइल पे रखोगे, यूज़ करोगे, टैगिंग देम एंड एवरीथिंग. और यू कैन, इफ यू हैव गुड अमाउंट ऑफ people on your platform, you can charge per post, per video, whatever charges you want to charge. So that was all for this video. It is quite long, I know, but I hope this video helped you in any way to start your journey into blogging. I will try to create a part 2 if I have some things to share, another tips and tricks and everything. I will surely make another video. I have mentioned everything in the description box, what phone I use, what gadgets I use, what application I use for editing, and everything is in the description box. Please read and comment anything if I missed anything. If you have any query on blogging or anything, I'm gonna reply for sure. Thank you so much for sticking around and waiting with me for this video. This was very, very highly asked. I hope I fulfilled your expectations, and thank you so much for being here. Have a good day, have a good night, and just stay safe, guys. It's crazy out there. Please wear a mask, take precautions, and be safe, please. Thank you so much. Bye.